Court in today's verdict has very clearly said that while the government did have the power to grant an extension after the 2021 amendment, while the amendment itself was valid, the government could not have gone against a specific order of the Supreme Court, which had said clearly that SK Mishra will not be granted further extension of tenure, especially since the matter itself was pending before the Supreme Court. We're speaking to Senior Advocate Anoop George Chaudhary, who's arguing in the court for petitioner Jaya Thakur. Sir, what does this now mean for SK Mishra and for the ED? As far as SK Mishra is concerned, it's the end of the road for him. And no longer he can continue. He has been given a temporary reprieve till the 31st of July. That's the end of the matter. But when it comes to the government, can this verdict be seen as sort of a setback to the government? Because the court has very clearly upheld the power of the parliament to amend the CVC Act to allow for an extension. And even they've also said that the further extensions can be given to an ED director if the high-powered committee recommends that way. So does that mean that any future directors of the Enforcement Directorate can also be given such extensions? See, the question is, what they have said is that the basis and the foundation of the judgment on which the previous judgment was delivered by the Supreme Court, that they can amend that and remove that foundation. So they have amended the fundamental rules, they have amended the Act. Although Act, there is no name. They only said they can grant extension. Now this is clearly in service jurisprudence. The terms and conditions of the service is dependent on the master. So I don't think the Supreme Court is wrong in saying that. In fact, our petition was that we have no problem with the amendment on the ordinance. We are not challenging. We are challenging a specific mandatory direction saying that you shall not continue. And that was a judgment in personam. Because that was a judgment specifically naming Mr. Mishra, saying that he should not be given a further extension because the extension given at that time violated the rules. My question to you, sir, however, is now what does this mean, not for Mr. Mishra, but for any future ED director? In any case, whether the judgment was there or judgment was not there, nothing prevented the government from exercising the power of amendment. That can always be there. You can't say, Supreme Court cannot say you will not amend the Act. That is in the field of legislation, which the Supreme Court would not go into. So that would not be material. Today, the amended Act is you can grant extensions. But I don't think any future possibility of any one person getting an extension of this nature continuously after his age of retirement. So it's just merely on paper. But otherwise, the government's orders granting extension have been termed as illegal. Now, there's definitely much to say on the steps of the government that's taken, passed an illegal order. The best part was, while the petition was pending, first extension, then the government thought it proper to grant him another extension while this issue was raised. And apart from that fact, the government forgot that it's a judgment, in the legal language, it's called a judgment in personam, as far as Sanjay Mishra was concerned. So it binds him. You may appoint anybody else, not him. No further extension to him. That could not have changed, and that's exactly what this court has held. Thank you very much, Mr. Chaudhary, for speaking to us. So clearly, this verdict is a big blow to SK Mishra, the current director of the Enforcement Directorate, as he has to vacate his post by the 31st of July. As far as the government is concerned, while they do have the power to amend the law, while they do have the power to grant extensions, the Supreme Court has raised a very simple question. When there was a specific judgment saying that you can appoint someone else, but this particular person, this particular occupant of the seat cannot be granted any further extensions. How exactly could the government have done that? And that is exactly the point that the court has raised. While directing that ED Director SK Mishra will have to vacate his post by the 31st of July, that the extensions granted to him of the tenure by the government was illegal and in direct violation of the specific mandamus given by the Supreme Court. No, it doesn't mean much for future appointments. All that it means is they have said that his
extension could not have been granted because it was barred by the initial judgment. Otherwise, they have upheld the amendment to the act by which the government is empowered to give further extensions. Okay. That's unfortunate because that will allow the ED directors to be completely under the control of the government, because they keep hanging this inducement of extension in order to keep them under control. The problem is that the appointment of the ED director is completely in the hands of the government. So there are 3 secretaries and some vigilance commissioners involved in his appointment. They are all controlled by the government. So unless there is an independent committee like there is for the director CBI, this ED, they will again appoint a useless director who is completely under the control of the government and who does the political bidding of the government. We need to have an independent selection committee like we have for CBI director. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने को चुनौती देने वाली याचिका पर संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका और केंद्र सरकार को मिली है थोड़ी राहत। इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील हमारे साथ है वरुण ठाकुर। वरुण, आज के इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं आप? आज का ये जो जजमेंट है एक ऐतिहासिक जजमेंट है और जिस तरीके से जो दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर दिए गए हैं उन दोनों जजमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया, तो एक वाकई में एक हिस्टोरिकल स्टेप कह सकते हैं हम। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही थी कि जो ईडी है वो एक बायस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ अपोजिट लीडर्स पे या अपोजिट पार्टियों पे भी सिर्फ रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के कारण वो आक्षेप पूरे होते हैं। हालांकि पहला एक्सटेंशन जो सरकार ने दिया था वो किस ग्राउंड पे दिया था, जबकि उनके रिटायरमेंट के 3-4 दिन पहले एक्सटेंशन दिया था, तो वो किस ग्राउंड पे दिया गया? सर, एक्चुअली जो संजय मिश्रा जी हैं वो कैरी नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है उनको ईडी डायरेक्टर की पोस्ट के लेके, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ही ईडी डायरेक्टर बन सकता है। वो कभी असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं रहे। 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, 2018 में, 2020 मई में उनका सुपरविजन था, पर उसके पहले ही उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अपॉइंटमेंट को लेके और एक्सटेंशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द अपॉइंटमेंट एंड द एक्सटेंशन, बट टेन्योर इज वेरी लिमिटेड, तो हम इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सिर्फ इतना कहेंगे कि जो एक्सटेंशन है रेयर ऑफ द रेयर केसेस में देना चाहिए, और चूंकि इनका अपॉइंटमेंट लिमिटेड है तो इनको फर्दर कंटिन्यू, पर इनके लिए फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है और न देना पड़ेगा। उस समय सरकार ने बोला था कि वो दूसरे एक्सटेंशन के बाद इनको अगला एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद तीसरा एक्सटेंशन दिया। हाँ सर, जैसे उन्होंने जजमेंट आया 1 महीने के बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आ गए, ऑर्डिनेंस के बाद उनको एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड करने के बाद पार्लियामेंट में लॉ पारित कराया, उसके बाद में दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट रिट पिटीशंस एक थर्ड एक्सटेंशन दे दिया गया, तो इसीलिए जो सेकेंड एक्सटेंशन और थर्ड एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि दोनों के दोनों एक्सटेंशन ऑर्डर इलीगल है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़े से पर आपत्ति जता के और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केंद्र सरकार की जो मंशा थी उसको लीगल करार दे दिया है, और जो संशोधन किया गया था संशोधन को आगे के लिए रास्ता क्लियर कर दिया है कोर्ट? सर, मैं फिर आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकता है, वो सर्वोच्च है, और उसके जो पैरामीटर हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके कारण से लॉ वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे कदम नहीं थे इस लॉ में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकता है। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से जो एक्सटेंशन ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया है ये वाकई में हिस्टोरिकल स्टेप है, पर जिस तरीके से पीसमील एक्सटेंशन दिया जा रहा था ये कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि जो ईडी डायरेक्टर है, अगर आपको अपॉइंट करना है 5 साल के लिए अपॉइंट करिए, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, और ईडी डायरेक्टर या कोई भी पोस्ट पे जो बैठा व्यक्ति है उसे पता है कि हमारे 5 साल तक है, हम अपना एक निष्पक्ष तरीके से और बिना बायस भी रह सकते हैं। पर जिस तरीके से टुकड़ों में एक्सटेंशन दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट पार्टी या अपोजिशन को ये लगता था कि अगर ईडी डायरेक्टर सरकार के हिसाब से काम करेगी तो एक्सटेंशन मिलेगा, और नहीं करेगी तो नहीं देंगे। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
संसद की सर्वोच्चता मानी है, संसद के कानून बनाने के अधिकार को तो बिल्कुल सुरक्षित रखा है, लेकिन सरकार के कामकाज और कामकाज करने के तौर तरीकों को लेकर आलोचना की है, जिससे कहीं न कहीं लगता है कि सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।